Hello. So I'm looking for scalp buy opportunities in Nifty after 12:30 close. If Nifty is near 850 levels, my target would be VWAP break. So would want to buy near lows because my stop loss will be very small, and I wouldn't really look to buy Nifty at or around VWAP. If after 12:30 close it crosses VWAP, if it is still near lows, I look for a buy opportunity. निफ्टी में मैं स्कैल्प बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ लोस के आसपास. टारगेट रहेगा मेरा वीवैप ब्रेक. बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा, रिलायंस में ट्रेड नहीं कर रहा. और निफ्टी अगर वो इस लेवल के आसपास है 870 850 के आसपास, 850 870 के आसपास है, तो ही मैं बाय करूँगा. मैं टारगेट रहेगा वीवैप ब्रेक. थैंक यू.